Hello children, how are you all? So we are back again with a new lesson, that is lesson number 5, the land of sand, Saudi Arabia, for class 5th, subject social studies. So all of you take out your page number 186. So last lesson was about Congo. We were discussing about the Congo, and now we will discuss about Saudi Arabia. I hope you people have heard this name, right? Yes. So Saudi Arabia, it is totally land with sand, like how we have Rajasthan, and Rajasthan is all about desert, a sand area. Similarly, Saudi Arabia is also one type of country where you can find a desert or the sand. So this is like a place where you don't have, आपके पास ना आप कुछ ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी प्लांट्स कुछ नहीं ग्रो होते हैं, और अगर है भी तो वो बहुत लिटिल कम क्वांटिटी में है. So like how Rajasthan में we cannot find any tree, right? Similarly, this area also, this desert region also does not have anything to grow. So this area is called as desert. Why? Because there is a lack of rain. Rajasthan also, it doesn't have rain, that's why it is desert. This area also doesn't have rain, that's why it is desert region. So this region is in a tropical region which receives annual rainfall. मतलब पूरे साल भर में उनको सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक का उनको खाली बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है, जिसके वजह से वो डेजर्ट बन गया. सो इन टेम्परेट रीजन एनुअल, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में सिर्फ 30 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, एंड टेम्परेट रीजन में you have how much? Only 20 centimeter of. So this desert are of two types, cold and hot, comparing their coldness, warmness in winter. Okay, so it has two types, cold and hot during summer and warm during winter. मतलब usually it does not have much cold, सिर्फ गर्मी ही रहेगी वहाँ पे. So desert may be sandy, stony and salty. So it is not only discussing about the desert of Saudi Arabia, these were discussed about the whole area where you have desert. So the tropical area में 30 सेंटीमीटर बारिश होती है, and temperate region में you have only how much? 20 centimeter of rainfall. So why it is causing desert? Because this area does not receive much rainfall. इसके वजह से ये area को desert कहा जाता है. So it consists of two types if you see the world map. Okay, तो इस area में it has northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, so northern hemisphere में you have what? Tropic of Cancer. So जहाँ पे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, जहाँ पे भी जितने भी स्टेट्स है, इट कंसिस्ट ऑफ डेजर्ट. एंड सदर्न एरिया में जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, देयर ऑल्सो यू हैव 3 हॉट डेजर्ट्स. सो यूजुअली हॉट डेजर्ट उस एरिया में आते हैं जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. इफ यू हैव आर्टिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल, दैट एरिया इज गुड इनफ, इट इज नॉट डेजर्ट. बट if there is like tropic of Cancer and tropic of Capricorn, you have what? Hot deserts. So the main hot deserts in the northern hemisphere, like tropic of Cancer, you have Colorado desert in the North America, Sahara desert in the North Africa, the Arabian desert lying between the Red Sea and the Persian Gulf, the Thar desert in the northwest of India. So tropic of Cancer on the northern hemisphere में आपके पास 4 desert है. Southern hemisphere में you have 3 types of desert, that is the Atacama desert of South America, the Namib and Kalahari desert of South Africa, and the Australian desert. So Saudi Arabia is the one country of the Arabian desert. It is a good example of hot dry desert for our study. So इतने सारे deserts में से हमें सिर्फ मतलब हमारी study के लिए they have given us the example of a Saudi Arabia where you can understand why there is a desert. Okay. So let us see the location and climate की सऊदी अरेबिया दुनिया में है कहाँ पे. So Saudi Arabia lies towards the Red Sea and the Persian Gulf. If you look at the map, Atlas book, you see Red Sea and Persian Gulf, you can find the Saudi Arabia. So it occupies the peninsula which is surrounded by the seas on the 3 sides. Apart from seas, इस area में पानी seas भी है but still वो desert है. Okay, so it is situated on the west of India. It is bordered by the Oman, Yemen, Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar and the United Arab Emirates. जैसा हमारे पास के पड़ोसी स्टेट्स कंट्रीज कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना.
तो इनके जो बॉर्डर कंट्रीज है वो है ओमान, यमन, जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतार and United Arab Emirates. So the whole country of the Saudi Arabia, it has a big rocky plateau. पूरा rocks, मिट्टी, plateaus ऐसे जमा है. Okay. So the sandy desert land broken by rocky hills. Again after that, the Saudi Arabia का जो there is a coastal plain. Saudi Arabia में there is what? Coastal plain beside the sea and then a high mountains. Okay, high mountains. So there is a coastal plain in the eastern part of the country. So it contains of both. One is a coastal plains and it contains of mountains also. So consisting of coastal plains as well as mountains, still this area contains desert because this does not receive heavy rainfall. So उसका climate is very harsh. Harsh in the sense मतलब गर्मी के टाइम पे, समर के टाइम पे इतनी गर्मी होती है कि we cannot bear it. People suffers a lot. Every home, I guess every home are having AC coolers. So apart from this, इसके साथ साथ जो समर में है ना, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, मिट्टी बहुत उड़ती है. So people, कोई भी अगर travel, hardly if they want to travel, they can travel only till 100 meters. That's it. अगर उनको travel करना है ना 100 meters तक वो लोग travel कर सकते हैं. तो गर्मी इतनी है कि if a person is strong enough, they can also travel, but still you know direct sun में इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड द सैंड बिकम्स हॉट वेरी सून. तो जो उसकी नाइट है वो नाइट कूल है, बट बिकॉज इट लूजेस, जो जैसा राजस्थान में रेत जो है जल्दी गर्म हो जाती है तो गर्म बहुत होता है, फिर रात के टाइम पे वो हीट लूज कर देता है तो सैंड ठंडी हो जाती है एंड द वेदर भी थोड़ा कूल हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है. सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है, उसके बाद में रात के टाइम पे थोड़ी ठंड, ज़्यादा नहीं, weather becomes pleasant. And winters also still the weather is not that much cold, it's okay, bearable. So there may be 3 to 4 hours. Huge piles of sand called sand dunes are shifted by it from one place to another place. मतलब समर के टाइम पे 3 या 4 घंटे ऐसा टाइम होता है जहाँ पे जो सैंड है ना वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट होते रहता है, मतलब रोटेशन completely. आज यहाँ पे एरिया में है, फिर वहाँ एरिया, फिर वहाँ एरिया, मतलब all areas में it gets on shifted. So these deserts get very less rainfall. So winter के टाइम पे the days are warm but the nights are quite cold. दिन थोड़े से गर्मी वाले ही रहते हैं, नाइट थोड़े ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं. ओके. सो कोस्टल प्लेसेस, जो कोस्टल एरियाज है वो कंपैरेटिवली प्लीजेंट अच्छे रहते हैं, बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है कि दे नीड टू वेयर अ स्वेटर्स और अ जैकेट्स. इट्स बेरेबल. So there are only few hills, that is like Abha in Saudi Arabia, which is quite cool in summer. So एक ही hill है, few hills है, one of the main hill is Abha and which is quite cool in summer also. Hills मतलब क्या, hills वो एरिया होते हैं जहाँ पे थोड़ी ठंड होती है समर के महीने में भी. So Saudi Arabia में एक hill है that is called as what? Abha. So this was the introduction and the climate of desert and Saudi Arabia. Okay, for today this much is enough. In the next class we will discuss about vegetation and wildlife and the life of the people. Okay, and your duty is, as I tell you, read the lesson and then watch my video. We'll complete this lesson as well as with the notes also. Will complete it soon. Meet you soon in our next video. Till then, children, goodbye and take care.